हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टॉपर्स वर्ल्ड। अज का साडा विषय जिहड़ा बहुत ही मज़ेदार विषय है कि असी इंग्लिश दे विच अपनियां मन दीयां भावनावां नूं एक्सप्रैस करन दे लई किहड़े शब्दां दा इस्तेमाल कर सकते हैं। जिवें पंजाबी विच असी कहने हैं कि बल्ले बल्ले, बहुत वधिया, शाबाश, बड़ी दुख दी गल है। सो ये सारियां भावनावां हैं, बड़ी दुख दी गल आ, मज़ा आ गया, शाबाश। इंग्लिश दे विच इन्हां वास्ते कुछ खास शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है जिन्होंने आप कहने हैं इंटरजैक्शन। तो अज का साडा वीडियो है इंटरजैक्शन के उत्ते। लैट्स लर्न इंटरजैक्शन एंड ट्राई टू एक्सप्रैस आवर फीलिंग्स विद द यूज ऑफ दीज वर्ड्स। तो सब तो पहला साडा वर्ड है हुर्रा। हुर्रा, हुर्रा इन इंग्लिश मीन्स when you have feelings of happiness, like you won the lottery, suppose तुसी कोई लॉटरी जीत ली करोड़ रुपए दी। Hurrah, I won the lottery. Hurrah, we won the match. It will be like that. Alas. Alas means बड़े दुख दी गल है। Alas, his father died. Alas, we lost the match. So next is poor. Vachara. Poor means vachara. Poor, you beggars. Poor beggars. Poor, his condition is so poor. So इस तरह यूज करेंगे। नेक्स्ट इज किसी ने आवाज मारनी हुई, हेलो हेलो, लिसन प्लीज, हेलो। तो इन दिस वे सो जॉय वास्ते ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ वर्ड हुर्रा। जब ਤੁਸੀਂ बहुत खुश हो तो यू विल से हुर्रा। दुख ਦੇ ਲਈ सैडनेस नहीं, अलास। पेन यानी दर्द है, तकलीफ है, ओ गॉड। अप्रूवल, किसी के काम नूं मानता देनी, रिकॉग्नाइज करना, मीन्स वेल डन, ब्रेवो, ओके। लिसन, किसी नूं आवाज मारनी, लिसन। लुक, हेलो, हे। डू नॉट, के काम तो मना करना, हे। स्कॉल्डिंग, किसी नूं झिड़कां देनियां दे लई साडे कोल की है, नॉनसेंस। So these are the feelings, these are the words that help us to express our sudden feelings and emotions. So I hope that you have enjoyed them learning. It's very easy to express the feelings in Punjabi, but in English it's a little difficult because we are not used to such kind of words. But now I have given you these words, so practice them and use them. Thank you very much. Good night.